आगे चलेंगे। द इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। लेक विक्टोरिया विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, लेक चैड, लेक तंगानिका विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, लेक मालावी, लेक एल्बर्ट, टर्काना, एडवर्ड एंड ताना। ताना अभी हमने मेंशन किया, इससे ब्लू नाइल निकलता है, विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलता है। आगे चलेंगे। लेक तंगानिका। लेक तंगानिका इट इज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, इट इज द सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर लेक बाइकल ऑफ रशिया. So Lake Tanganyika, it is the second deepest lake in the world. It is bordered by Burundi, Tanzania, Zambia and Democratic Republic of Congo. So Lake Tanganyika, it is bordered by four countries: Burundi, Tanzania, Zambia and Democratic Republic of Congo. Lake Edward and Lake Albert, they form the boundary between Democratic Republic of Congo and Uganda. Lake Turkana. Lake Turkana, it is present in Kenya and it reaches the borders of Ethiopia. और इसके बाद लेक चैड है। लेक चैड इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द फोर कंट्रीज। ये फोर कंट्रीज की बाउंड्री पे है। एक तो चैड है, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया, CCNN. These countries they border Lake Chad. Lake Victoria, which is the important lake in Africa, it is also known as Lake Yukriv. Lake Yukriv, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। इनफैक्ट ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, नेक्स्ट टू लेक सुपीरियर। ये तीन कंट्रीज की बॉर्डर पे है, तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। ये इसको आप TUK से याद रख सकते हो, TUK. लेक विक्टोरिया इज प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया। इससे वाइट नाइल ओरिजिनेट होता है, लेक विक्टोरिया से निकला, फिर इट फ्लोज थ्रू लेक कोयोगा, लेक एल्बर्ट एंड फाइनली इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स एंड एट द सिटी ऑफ खर्तुम इट मीट्स ब्लू नाइल एंड flows in the form of river Nile northwards and finally it falls into the Mediterranean Sea. Important dams of Africa. Kariba Dam, it is present on the river Zambezi. डैम एसन, जैसा कि मैंने अभी बोला, इट इज प्रेजेंट ऑन द रिवर नाइल। इसके पीछे रिजर्वायर बनता है, उसको हम नासिर रिजर्वायर कहते हैं। ओकोसोम्बो. ओकोसोम्बो इट इज द बिगेस्ट डैम ऑफ अफ्रीका एंड इट लाइज कंप्लीटली इन द रिपब्लिक ऑफ गाना. इट इज प्रेजेंट ऑन द रिवर वोल्टा. आगे चलेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इज अल्जीरिया. द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ Africa is Seychelles. Seychelles is an archipelago, so it is outside the mainland of Africa. So the smallest nation of continental mainland of Africa is Gambia. So Algeria is the largest country, Gambia is the smallest country in the mainland, while Seychelles is the smallest country of Africa. Important points of Africa. The highest point of Africa is Mount Kilimanjaro in Tanzania, while the lowest point in Africa is Lake Assal in Djibouti. Extreme points in Africa. There is the northern, southern, western and eastern extreme points. पहले आप कंट्रीज के नाम याद रखेंगे. द नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री इज टूनिशिया, द साउदर्न मोस्ट इज साउथ अफ्रीका, द ईस्टर्न मोस्ट इज सोमालिया एंड द वेस्टर्न मोस्ट इज सेनेगल. So northernmost point is Ras Ben Saka. The southernmost point is Cape Agulhas. The westernmost point is Pointe des Almadies. And the easternmost point is Ras Hafun or Ras Zafun. Important islands of Africa. There are islands in the Indian Ocean as well as the Atlantic Ocean. The important island, that is the Madagascar island, it is present in the Indian Ocean. It is the fourth largest island in the world and it is the largest island of Africa. It is separated from the mainland of Africa by the Mozambique Channel or Channel of Dame. Other islands are Mauritius, Reunion Island, the islands of Sao Tome and Principe. They are important. The islands in Atlantic Ocean are Canary Island, Cape Verde Island, there are Azores, there are Madeira Islands, St. Helena Island, Ascension Island.
but the most important one is the Madagascar island in the Indian Ocean. Here, this is the Madagascar island. The closest country to Madagascar is Mozambique. The channel between Mozambique and Madagascar is the Channel of Dame or Mozambique Channel.